Good morning, students. Welcome to class 7 science video, which is our part 20 of chapter 2nd, and it is our revision video. Student, in our last video, we completed our second chapter, which is nutrition in animals. Okay, and we completed some topic also, and we revised some topic like introduction and different steps in the nutrition. So it is our revision video, student. So we revise the further topics of our second chapter like nutrition in amoeba, frog, and in human beings. Okay, the next topic which we have to revise, student, is nutrition in amoeba. Now we all know that what is amoeba because we already studied it. We just have to revise now. So student, amoeba is, इट इज़ अ यूनिसेलुलर, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल, और ये वाटर में प्रेजेंट होता है. एंड इट हैव अ न्यूक्लियस एंड टाइनी बबल्स. टाइनी बबल्स स्टूडेंट वर्ड वैक्यूल्स in the cytoplasm, which I already seen in the diagram. Food vacuoles क्या होते हैं student? Where the amoeba store or digest its food. It's known as food vacuole when it captures the food with the help of pseudopodia. Pseudopodia having a two function. We know that, student. First, इट हेल्प्स इन इनगल्फिंग द फूड. ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है. सेकेंड इज़ इन द हेल्प ऑफ मूवमेंट, जिसके थ्रू अमीबा मूव करता है. सो फूड वैक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन द अमीबा कैप्चर द फूड थ्रू सूडोफोडिया. कैप्चर द फूड पार्टिकल्स, covers the food particle through pseudopodia and form food vacuole where the food digest. It is a process of nutrition in amoeba. जब food digest होता है, food को capture करके उसको digest तक करना, it's known as nutrition only. It means how the organism obtain their food. It's a nutrition. Now from the digestion, from the food the nutrient obtained, इट्स नोन एज न्यूट्रिएंट. अब जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड होंगे वो होता है न्यूट्रिएंट थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी. सो इंजेक्शन, व्हाट इज स्टूडेंट इंजेक्शन? इनगल्फिंग ऑफ फूड. फर्स्ट जो अमीबा है वो फूड को इनगल्फ करेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोफोडिया. सूडोफोडिया के थ्रू ये कैविटी फॉर्म करेगा. कैविटी इज व्हाट? फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल जब फॉर्म्ड हो जाएंगे तब डाइजेशन. सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है इन द फूड वैक्यूल. हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या आया? डाइजेशन, वेयर द फूड डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस. जो हमारे स्टमक में जूस प्रेजेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड. नेक्स्ट, अब जो फूड एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रिएंट release हो रहे हैं from the food, now they have to absorb. So our next step is absorption. Absorption means after digestion, when our food is digested, so the nutrient get released and these nutrient absorbed. Human being में absorbed का होता है in the blood, and in amoeba it absorbed in the cytoplasm. And assimilation process means, student, providing energy. The food which absorbed, which gives us energy, that process is known as assimilation. Now हमने अमीबा ने फूड को इनगल्फ करा, it digested and get nutrient from it through which it get energy. Now the waste product which don't have any energy, so it have to be removed from the body. So the last is egestion. Egestion means excretion out of the undigested food, जिसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं, या फिर वो फूड जिससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड हो गए इन अवर ब्लड, सो द रिमेनिंग पोर्शन विल बी excrete out. This is known as egestion. It is all about the amoeba.
Next is frog. Students, you have to know that just what is द फीडिंग हैबिट ऑफ फ्रॉग, मतलब कि फ्रॉग अपना फूड कैसे कैप्चर करता है, किस तरीके से इनटेक करता है. सो द फीडिंग हैबिट इज catching. So how the frog catches its food, take its food with the help of catching. Frog catch insects which are their food. And how they catch their food, students? They catch their food with the help of long, thick, sticky tongue. Okay. Now same process like in human beings and in amoeba. First is catch its food. Catch its food means it ingests the food, it intakes the food. Okay. उसने फूड को इंजेस्ट करा, अपने माउथ में इनटेक करा. सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन. नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन. डाइजेशन इज व्हाट? इन विच दैट फूड गेट डिसोसिएट इनटू स्मॉल पीसेस विच इज कैच बाय द फ्रॉग and nutrient get released. Now nutrient get released, so our next step is absorption. It means that nutrient will get absorbed in the frog blood. Now next step is energy. जो हमारा फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एसिमिलेशन. एंड नाउ लास्ट स्टेप इज इजेशन इन विच द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. सो इट इज़ अबाउट कि किस तरीके से जो फ्रॉग है वो अपना न्यूट्रिशन कैरी करता है, किस तरीके से जो फूड है वो इनटेक करता है, डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग में हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑकर इन द ह्यूमन बीइंग. सो देयर आर सम ऑर्गन्स थ्रू विच द न्यूट्रिशन कैरी आउट विच इज़ एंड these 8 organ called as alimentary canal. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? इट्स अ बक्कल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach. We already studied in. We are just revising topic. Okay. So digestive system is known as alimentary canal, which is about 21 feet. So first we talk about buccal cavity. Student, now we know that what is buccal cavity. We can call it as a mouth cavity also. Why? And what is cavity, student? It means a space. So mouth having a space, it consists of teeth, tongue, salivary glands. So buccal cavity, it is about buccal cavity. Okay. Next is tongue. टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो टंग का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग लाइक whenever you speak with someone else, and it help in ingestion, mastication and swallowing of food. So it is very essential organ of our human body, because अगर टंग ही नहीं होगी तो how you digest your food, how you intake your food, how will you tell your feelings to other. So it is very important. So it is a muscular structure, and muscular structure, student, what? Which having no bone, having a muscles known as a muscular structure. Ingestion, we all know that now. It means intake of food. Mastication means food को smaller pieces में dissociate करना with the help of tongue. अगर टंग नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? Only no teeth can help, है ना? So mastication, swallowing means निगलना, food को esophagus और food pipe में transfer करना. Next we know that it help in speaking. And student, how can you concluded that the food taste, that it is having a chili, sugary and salty with the help of taste bud? There are millions of taste bud which is present on our tongue. Next is about teeth. We know that human beings or living being having 32 teeth in the human. And what is the function of the teeth? It help in cutting, tearing and grinding. आप teeth की help से जो food है उसको cut करते हो, उसको और small pieces में करते हो. If you have to tear, like कोई भी आपको, if you don't have a scissors, आप teeth की help से उसको tear करते हो, है ना? So how many types of teeth are there? Incisor, canines,
premolars and molars. It means 4 type of teeth. But before these, there are some another types which comes according our age. Like जो हमारी एज के अकॉर्डिंग जो टीथ आते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, विच इज़ मिल्क, परमानेंट एंड टूथ. मिल्क टीथ जब आप बहुत छोटे, लाइक चिल्ड्रन, अभी आपकी जो जैसे 5th अप टू जो 4th क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैविंग अ मिल्क टीथ. फिर आफ्टर द एज ऑफ 5 और 6 दे गॉट द परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ इज़ व्हाट, जो अब आपके मिल्क टीथ के बाद जो टीथ न्यू आते हैं, दैट इज़ योर परमानेंट टीथ. अगर वो अभी कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, दे ब्रोक, सो नो वन कैन टेक प्लेस. ओके, no other teeth can take place. Next is tooth enamel. Enamel is what, the outer covering of your teeth, which is very hard and white in color. So students, we are talking about types. So here are the types like incisor, premolars, canines and molar. Incisor is what, जो सबसे front teeth होते हैं आपके, जो आपके front teeth हैं, they are incisor, which mainly help in student like biting of biscuit. Okay, canine is what, which are associated to next to the incisor. So canine help in like non-veg food. When you have to eat non-veg, so you use your canines teeth. Premolars and molars, when you want to eat chapati, so you will use your premolar teeth. Next topic is salivary gland, student, which we will continue in our next video.